Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 3, Human Health, and today I will deliver its 6th lecture. So in today's lecture, we will discuss the remaining important nutrients that we were discussing, which are present in our diet. In the previous lecture, we discussed about carbohydrates, proteins, and lipids. In today's lecture, we will discuss about vitamins and minerals, which are also present in our diet. So my dear students, let's recap what we did in the previous lecture. So quickly tell me why carbohydrates are most important for our body. Very good. From which food we gain proteins and lipids. Very nice. Now we will move forward towards the pictures. So carbohydrates are fuel of the body, and we get proteins and fats we get proteins from meat and different fruits and milk, whereas we get fats from oil, ghee, and different meats. They have fat in them. So my dear students, nuts also have fat in them. So proteins, carbs, and fats, we have already discussed about them. Today, now let's move towards ice-breaking activity. Show students given pictures and ask them what is need to make our bones strong. From given foods, what type of nutrients we gain. So my dear students, हमारी bones के लिए कौन सा जो nutrient है वो बहुत important है, या कौन सा food बहुत important है, that is milk. Very good, because milk makes our body strong, makes our bones strong. And different fruits, they also have vitamins in them, which are very important for our body. So in today's lecture, we will discuss about vitamins and lipids. So milk has different vitamins and lipids in them. We will discuss about lipids and minerals. So in today's lecture, students will be able to define balanced diet and explain its components. So my dear students, now let's quickly look at the Islamic perspective. Eat of the good things which we have provided for you. So my dear students, Allah Ta'ala फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इतनी बेशुमार जो है हमें नेमतें दी हैं, हमें चाहिए कि हम उनमें से जो अच्छी चीज़ें हैं, जो हलाल रिज्क है, हम उसको जो है वो सिलेक्ट करें. So my dear students, the pre-reading question, are minerals important for our body? Yes, they are very important. How many types of vitamins do you know about? I know about vitamin A, vitamin B, vitamin D, vitamin C also. So these are some vitamins that I know about and which are very important for our body, and they are present in different foods. So now is the time for reading. I request you all to please open page number 45 in your Science 4 books. I hope everybody has opened the page. Now we will start the reading. Put your fingers where I will read. Vitamins. Vitamins are not the source of energy, but they help in energy production. They are required in small amounts by the body. There are different types of vitamins that include vitamin A, B, C, D, E, and K. All these vitamins are very important for health. So my dear students, vitamins जो हैं ये आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये आपकी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल हैं. यानी कि आपकी बॉडी जो एनर्जी को यूज़ करती है, ये उसकी प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और विटामिन्स जो हैं ये डिफरेंट तरह के होते हैं, ये डिफरेंट फूड्स में पाए जाते हैं. जो इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं वो हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के. और ये तमाम विटामिन्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. सो कौन कौन से विटामिन्स कौन कौन से फूड्स में प्रेजेंट है, क्या इनका सोर्स है और इनका फंक्शन क्या है, लेट्स रीड इन डिटेल. विटामिन ए, what is its source? Let's have a look. Green leafy vegetables, mangoes and carrots have vitamin A in them. इसका function क्या है? Good for eyesight. Vitamin B, it is present in milk, bananas, fish, chicken, potatoes, cheese, whole grains. और इसका function क्या है? Energy production, make blood healthy. Vitamin C, बहुत important vitamin है. It is present in citrus fruits, mangoes, broccoli and strawberry. And what does it do? It boosts immune system, keeps the skin healthy. Vitamin D. It is present in milk, fortified rice, soya bean. Vitamin D makes your bones strong.
और इसका फंक्शन क्या है? कीप्स आवर बोन्स हेल्दी. Vitamin E, it is present in eggs, dry fruits and peas. And what does it do? It prevents muscles and vascular abnormalities. यानी कि हमारे मसल्स को और हमारी वेस्कुलर जो हमारे बॉडी के अंदर वेसल्स मौजूद हैं उनकी एबनॉर्मेलिटीज से हमें प्रिवेंट करते हैं. Vitamin K, it is present in milk, leafy vegetables and fruits. Essential for blood clotting. यानी कि अगर हमारे हम विटामिन के कंज्यूम करेंगे तो हमारा ब्लड जो है वो थिक नहीं होगा, क्लॉट नहीं होगा. सो ऑल दीज विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक सिंगल फूड जो है जैसे कि मिल्क है या एग्स हैं, इनके अंदर डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पाए जा सकते हैं. यानी कि एक ही फूड के अंदर प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, विटामिन्स भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, फैट्स भी हो सकते हैं. सो कीप दिस इन माइंड. सो विटामिन्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी. Not the source of energy, but they are important for energy production. So the important vitamins are A, B, C, D and K. So vitamin A is present in leafy vegetables और ये हमारी आई साइट को improve करता है. Vitamin C जो है ये different fruits में पैदा है, ये हमारे होता है, ये हमारे immune system को better करता है और हमारी skin को better करता है. Vitamin D जो है ये हमारी bones को strong करता है. Vitamin B जो है ये हमारे हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करता है. विटामिन ई जो है ये हमारी बॉडी को हेल्दी बनाता है, हमारे मसल्स को स्ट्रांग रखता है. और विटामिन के जो है ये हमारे जो वेसल्स हैं और हमारे जो बॉडी के अंदर क्लॉटिंग है उसको होने से सेव करता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्विकली ओपन पेज नंबर 45 एंड वी विल डिस्कस अबाउट मिनरल्स नाउ. Very good. Now let's start reading about minerals. Like vitamins, minerals do not provide energy to the body, but they are required for body growth, building bones, etc. Calcium, zinc, iron, iodine, phosphorus, and magnesium are some essential minerals. They are needed in small amounts. So my dear students, vitamins की तरह minerals भी हमारी body को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं, ना ये energy produce करते हैं, लेकिन ये बॉडी को बिल्ड करने में, उसकी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफरेंट तरह के मिनरल्स हैं, कैल्शियम, जिंक, आयरन, आयोडीन, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी बॉडी को बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं. सो मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड एंड वाटर. दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स through their roots. Animals obtain them by consuming plants and drinking water. We can also obtain them by taking salts. Each mineral has specific source and performs specific function. So my dear students, minerals जो हैं ये मिट्टी में और पानी में मौजूद होते हैं. प्लांट्स जब मिट्टी में ग्रो करते हैं और वहाँ से पानी को टेकअप करते हैं तो ये मिनरल्स जो हैं इनकी प्लांट्स की बॉडी में शामिल हो जाते हैं. इसी तरह एनिमल्स जो हैं जो प्लांट्स को खाते हैं उनकी बॉडी में भी डिफरेंट मिनरल्स आ जाते हैं. और इसी तरह जब आप प्लांट्स को या एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं तो आपको भी डिफरेंट तरह के मिनरल्स मिलते हैं. डिफरेंट जो सॉल्ट्स हैं उनके अंदर भी मिनरल्स होते हैं और इन मिनरल्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं. लेट्स हैव अ लुक. सो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन अबाउट ईच मिनरल गिवन ऑन पेज नंबर 45 एंड 46. उसका सोर्स देखेंगे और उसका फंक्शन भी देखेंगे. कैल्शियम, इट इज़ प्रेजेंट इन मिल्क, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, nuts and meat. And what is its function? It forms and maintains bones, यानी कि हमारी bones को healthy रखता है. Now next is phosphorus. Meat, fish, nuts, legumes, milk and grain products have phosphorus in them and it builds strong bones. ये भी हमारी हड्डियों को मजबूत करता है. Magnesium, it is present in fruits, green leafy vegetables and eggs. It aids in tissue formation. जो हमारी मसल है और टिश्यू है ये उसको फॉर्म करने में हेल्प करते हैं. मैग्नीशियम. नाउ आयरन, रेड मीट, legumes, leafy green vegetables, dry fruits, they all have iron in them and from hemoglobin they form hemoglobin and red blood cells. So जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है और हीमोग्लोबिन है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ये जो है ये आयरन जो है उसको बनाने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज जिंक. Shellfish, beef, chicken, nuts, soya products, wheat, they have zinc in them. They heal wounds, help in general growth and maintenance of all tissues. So आपके ज़ख़म जो हैं और आपकी ग्रोथ के अंदर जो है वो जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज आयोडीन.
Iodized salts, ocean fish and seaweeds, they have iodine in them, and iodine aids in the function of thyroid. आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड्स होते हैं यहाँ, और ये जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल. So my dear students, this is what we have read about different important minerals. So minerals help for body growth and building bones. So calcium, magnesium, phosphorus, zinc, iodine and iron. These are important minerals, and they are present in different foods. दूध में प्रेजेंट है, अंडे में प्रेजेंट है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में प्रेजेंट है, और ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे आयरन को बिल्डअप करते हैं बॉडी के अंदर, हमारे मसल्स को, टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं. इसके अलावा हमारा हीमोग्लोबिन है उसको इंक्रीज़ करते हैं, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ बोन्स एंड डिफरेंट बॉडी tissues and organs. And iodine is very important for the functioning of thyroid gland in our body. So my dear students, now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, write down your name and your roll number, and then read carefully about all these vitamins, और ये किस किस food group में present है वो इसके सामने लिखा हुआ है. And then write. आपको यहाँ पे डिफरेंट फूड ग्रुप्स दिए हुए हैं, आपको इनके नीचे लिखना है कि कौन से ग्रुप में कौन सा प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल कैरेट्स के अंदर विटामिन ए होता है. एग्स में कौन कौन सा विटामिन होता है? एग्स में लेट्स सी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी. सो यू विल राइट हेयर ए, बी एंड डी. सो दिस इज हाउ you will complete the rest of the question. Now, the second part of the worksheet, complete and choose the correct answer. So here are some minerals given. So what you need to do is आपको correct food के सामने correct mineral का नाम लिखना है कि हमें कौन सा जो food group है वो कौन सा mineral जो है वो provide करता है. For example, here you can see salt. It provides us iodine. So you will write here iodine. Then what is soya has in it, what is meat has in it, leafy green vegetables, nuts and bananas. Write and complete it. You can also take help from your book. So pause the video and complete the worksheet. I hope everybody has finished it. Now we will move forward towards the evaluation. How minerals are important for us? Because they help us in different body functions. ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करने में ये बहुत हेल्पफुल है. सो व्हाट शुड वी टेक टू मेक आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग? वी मस्ट कंज्यूम मिल्क व्हिच हैज कैल्शियम इन इट टू मेक आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग. So now is the time for homework given on page number 46, home activity. What you need to do is each student needs to create a one-page diet plan for his or her own well-being and share it with the teacher and parents. A diet plan specimen has been given. So my dear students, आपको एक sample दिया गया है diet plan का कि आप daily Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कौन कौन से फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करेंगे और क्या क्या खाएंगे. मेक अ प्लान फॉर योर होल वीक, शेयर इट विद योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स, एंड यू विल लव डूइंग दिस एक्टिविटी. So this is your homework, and given on page number 50 is also your homework. Question number 2 from section number C. You will complete this question, vitamins and minerals. This is your homework. Now is the time for wrap up. So my dear students, today we have learned vitamins help in energy production. Vitamin A, B, C, D, E and vitamin K are the important vitamins. Minerals are essential for body growth and building bones. Calcium, phosphorus, magnesium, iodine, zinc and iron are some important minerals. So my dear students, I hope you have learnt about all the important food groups which are present in a balanced diet, which are needed for the balanced diet. So my dear students, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.